हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अंडर द हुड। आजकल हाल ही में हमने देखा होगा चैट जीपीटी जब से आया है आफ्टर कोविड, राइट? एआई की फील्ड में लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैव स्टार्टेड हैपनिंग। नए नए टूल आ रहे हैं, कभी नया कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, कभी ब्रेक थ्रू आ रहा है, कभी कह रहे हैं कि रैग चल रहा है, कभी एजेंटिक एआई। सो बिगिनर्स के लिए ऑफन इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट करें। कोई बिगनर नहीं भी है या कोई सिर्फ जस्ट देखना चाहता है क्या है, तो उसके लिए भी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसी जर्नी के लिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक नई यूट्यूब सीरीज बनाई जाए जिसमें जस्ट इंडेक्स आपके लिए होगा, वो जिसमें आपके ऑल जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स होंगे इन वेरी सिंपल टर्म्स, नो टेक्निकल jargons। उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, एंड देन यू कैन यूज एआई और some videos where you will have a background picture if these are the concepts which I have to learn and extra concept which they are teaching। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो है कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, ये सब है क्या, व्हाट इट इज। आप अगर गूगल करोगे तो एक डायग्राम मिलेगा जिसमें एआई एक सर्कल होगा, उसके अंदर यू विल हैव अ मशीन लर्निंग एंड इनसाइड दैट यू विल हैव अ डीप लर्निंग एंड देन जनरेटिव एआई, समथिंग लाइक द नेस्टिंग डॉल्स। सो अगर आप इसमें देखेंगे डायग्राम में, so artificial intelligence, machine learning, deep learning and generative AI. So question arises, होता क्या है ये? So artificial intelligence is, you can think of a machine where your goal is to make it think smarter like humans, right? Machine learning उसके अंदर इसलिए है क्योंकि it is one of the ways to make the machine smarter, right? Machine learning, instead of making rules or some finding other ways to make the machine smarter, it tries to find a pattern and then it performs the required task. Deep learning क्या है? Again, it is trying to make the system smart using the pattern in the data, but it is trying to mimic the human brain. So human brain को mimic करेगा using layers. That is why it is deep learning and it is inside the machine learning arena, right? Now comes generative AI. Generative AI is generating something using AI. Again, system became smarter, artificial intelligence. It is using patterns, so machine learning, mimicking the human brain. So it is inside deep learning, right? And it is a separate domain. Why? Because it is creating something for us. Now artificial intelligence. So artificial intelligence अभी का concept नहीं है. It is first started around 1950s, right? At that time definition was human logic को mimic कर ले. If the machine is smart, it is AI. उस समय पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बैकग्राउंड पे था। नाउ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है? देयर आर डिफरेंट वेज टू लर्न समथिंग, राइट? जैसे आप you explain a kid something, right? So what happens is you show that kid different objects, right? So ये टेबल है, ये चेयर है, ये फैन है, ये लाइट है। Continuously you keep on showing him that thing and slowly that kid starts learning. Similarly, instead of writing rules, you provide data to the machine. Then the machine will try to find out patterns in that data and then it will be able to perform the task. So one way is, say I provide a system with 10,000 images of cat. Another way could be that I explain the system what is cat. So now it will have two eyes, it will have a mouth, two ears, four legs, but this description will match to some other animal also.
A easier or a better way would be I can provide around 10,000 images of cat so that the system start recognizing the cat. So that is what that system will come into machine learning. Now deep learning is where we are trying to mimic the neural networks that is in human brains. So human brains may, if you will study, right, usually neurons gets connected to each other. So similarly, we try to connect the technicality में ना जाते हुए we'll try the input of one model, or you can say input of one artificial network will be acting, or you can say output of one artificial network would be the input for the other network. अब वो कैसे create होता है वो if we'll go deeper then we'll understand, but वो एक mathematical equation है जिस पे data का pattern निकला, वो pattern निकला and it became the input for another artificial neural network. उसमें भी वो पैटर्न एडजस्ट करेगा, वेट करेगा एंड देन इट विल प्रोसीड. सो दैट कम्स अंडर डीप लर्निंग. नाउ व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई is using this deep learning concept to create something new for us. That could be an image, it could generate text, it could generate audio, or it could generate video. Text generation में क्या होगा? It will be able to generate a new text, that is it will be able to write something for you, it will be able to summarize something, anything related to text. So it will be able to summarize, it will be write a book for you, it will write a poetry for you, it could write say a movie for you, it could, I mean anything related to text it will be able to do, right? Similarly, it can generate images for you. आप उसको natural language में दोगे instruction कि ये भाई चाहिए मुझे, and it can generate the similar image for you. But how widely you describe उस पे image base होगी. सिमिलरली वीडियोस क्रिएट हो सकती हैं. हाल ही में आपने एक महाभारत सीरीज देखी होगी, राइट, जो एआई जनरेटेड है. तो आपने उसको डेफिनेशन दी, ये मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा सीन चाहिए, सिनेमेटोग्राफी ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये, एंड देन इट स्टार्टेड डेवलपिंग अ वीडियो फॉर यू. सो जनरेटिव एआई को आप ऐसे समझ लो, इट इज अ हाईली एडवांस प्रिडिक्टर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड फॉर यू. So that is why it is not understanding the facts and figures. It only creates the or finds out the probability of the next word for you. That is generative AI, right? Now, simple thing is if we have started using generative AI, so say we search something on Google, right? And similar thing we search on say a chat GPT, which we all know. So ChatGPT will use 10 times more electricity than your standard Google search. So that is why if you are seeing nowadays there is a news that a lot of resources are consuming, powers are more, data centers we require, right? Cooling we require. So that is why, because these generative AI models, you can say, or machines are consuming lot of resources. So try to use judiciously. Right? So in short, the difference is AI is you are trying to mimic human behavior. Weakness was that it was rigid and creativity was less. At that time, traditional AIs were used. So what used to happen was, again, concepts were same, but how it was, you have to start everything from the scratch. So आप डेटा लेके आओगे, उसको प्रोसेस करोगे, देन आप सिस्टम को दोगे कि भाई इससे पैटर्न निकाल, राइट? तो उसमें लॉट ऑफ सीपीयू चाहिए, मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, राइट, मनी चाहिए. So people were not opting for those. I mean, in day-to-day life, AI was not getting adopted. Then generative AI came. Generative AI क्या है? You think of it as a system that is pre-trained on certain amount of data, right? Like chat GPT का जो
मॉडल होगा उसको ऑलरेडी प्री ट्रेन कर दिया टू अ सर्टेन लेवल। अब आप ऐसा समझ लो जैसे ग्रेजुएशन होती है, राइट? सो यू डू हैव डिफरेंट ग्रेजुएट्स, कोई बीएससी होगा, कोई बीटेक होगा, डिफरेंट ब्रांच में होगा। देन वंस दे जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क, राइट? सिमिलरली वो जो ग्रेजुएट्स हैं वो आपके जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं विच यू आर लेवरेजिंग, एंड देन यू कैन फाइन ट्यून इट, यू कैन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे हाउ वी डू दैट, बट वी tune them to our requirement to get better results, right? So remember this, how AI, machine learning, deep learning and generative AI are different. जनरेटिव एआई हाल ही के जो मॉडल्स हैं, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एक स्मॉल आइकन आया है, राइट, मेटा का, दैट इज अ LLM model which comes under generative AI. LLM model is a, you can say, core of generative AI, जो सारा काम आपको करके दे रहा है। उसकी वीकनेस ये होगी क्योंकि उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में नहीं आता, वो पैटर्न निकाल रहा है तो वो हेलुसिनेट करता है। वी अगेन सी हेलुसिनेशन क्या है, बट उसको नहीं पता होता कि कब कहना आई डोंट नो, राइट? We'll see later in other videos how can we minimize this, what are the different concepts related to AI, what is RAG, what is embeddings, what is vector database. बस फॉर नाउ आज इसको हल्का रखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and we'll catch up again on the next video that will be based on the LLMs. So we'll start the generative AI from the next video. Thank you.